Hello students, welcome to my YouTube channel Biology with Johnny Lal. In today's video, we will discuss about transcription in eukaryotes. First, what is transcription? Transcription is the process of synthesizing RNA from a DNA template. In eukaryotes, it takes place in nucleus. In eukaryotes, there are three major classes of RNA polymerases, which are designated as RNA polymerase 1 for rRNA synthesis, RNA polymerase 2 for messenger RNA, RNA polymerase 3 for transfer RNA, and all of these are found in nucleus. और तीनों एंजाइम में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है इनकी एक्टिविटी के लिए जरूरी आयन के बेसिस पे और सेंसिटिविटी टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स. RNA polymerase 1 located in nucleolus and not sensitive to antibiotic like alpha amanitin. RNA polymerase 2 located in nucleoplasm and it is sensitive to alpha amanitin. RNA polymerase 3 also located in nucleoplasm और इसकी एक्टिविटी को अल्फा अमाइनिटिन इनहिबिट करती है एनिमल्स में, लेकिन ईस्ट और इंसेक्ट में अल्फा अमाइनिटिन जो है वो RNA polymerase 3 को अफेक्ट नहीं करती है. अब क्योंकि मोस्ट रिसर्च RNA polymerase 2 पे हुई है तो इसलिए यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म हम RNA polymerase 2 के लिए स्टडी करेंगे जो कि मैसेंजर RNA को सिंथेसाइज करेगा. यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोमोटर, एनहेंसर और साइलेंसर की जरूरत होती है. प्रमोटर ऑफ RNA polymerase 2 contain 3 distinct regions और जो कि 25 अपस्ट्रीम बेस पेयर, अपस्ट्रीम 100 बेस पेयर और अपस्ट्रीम 20 बेस पेयर पे लोकेटेड है. और फर्दर अपस्ट्रीम एक और सीक्वेंस CAAT और कैट बॉक्स लोकेटेड है और जो इनिशिएशन के लिए जरूरी है. Another sequence GC box found at upstream 60 or upstream 100 from starting point in many genes. और यूकैरियोट्स में कैट और GC determine efficiency of transcription, जबकि टाटा बॉक्स aligns RNA polymerase at proper site with the help of transcription factors. For example, TFIID यूकैरियोटिक प्रमोटर पे अपस्ट्रीम 100 और अपस्ट्रीम 200 बेस पेयर के बीच में एक और सीक्वेंस होता है जो प्रमोटर की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है जिसको एनहेंसर बोलते हैं, और अनदर रेगुलेटर सीक्वेंस जो जीन की एक्टिविटी को रिप्रेस करते हैं और इनको साइलेंसर कहते हैं. नाउ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन आल्सो इन्वॉल्व्स 3 steps. फर्स्ट इनिशिएशन, सेकेंड इलोंगेशन, थर्ड टर्मिनेशन. फर्स्ट इनिशिएशन. Generally, each of RNA polymerase is believed to have its own set of transcription factors. However, TFIID or a part of it, TBP, Tata binding protein, is required for all the 3 RNA polymerases. Actually, transcription factors can be defined as proteins which are needed for transcription initiation but are not part of the RNA polymerase. They help in DNA binding of a RNA polymerase to constitute the so-called pre-initiation complex or transcription complex. After the formation of this complex, initiation of transcription occurs. Now, formation of transcriptosome with RNA polymerase 2.
A promoter sequence which is responsible for constitutive expression of common genes, also called housekeeping gene, in all cells is called generic promoter. Initiation of transcription on the generic promoter by RNA polymerase II requires the action of diverse transcription factors in the following order. First, TFIID binds at Tata box and then permits the association of TFIIA and TFIIB. In second substeps, TFIIB forms DV complex and RNA polymerase II associate to promoter. In third substep, RNA polymerase II जो है वो प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा by TFIIF to form transcription complex and then orderly addition of TFIIE, TFIIH and TFIIJ to help initiation process. Now second step, elongation. There are certain accessory proteins of transcription called elongation factor. तो जैसे इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत थी वैसे ही इलोंगेशन स्टेप के लिए यूकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर की जरूरत होती है और ये जो इलोंगेशन फैक्टर है ये आरएनए पॉलीमरेज 2 की जो ओवरऑल एक्टिविटी है उसको एनहेंस कर देते हैं एंड लीड टू इंक्रीज इन द इलोंगेशन रेट और इलोंगेशन रेट को हाई कर देते हैं. At least two such proteins are known to accelerate RNA chain elongation and these are TFIIF and TFIIS. And during elongation, RNA polymerase 2 moves along the DNA template strand in the 3 to 5 direction and synthesizes RNA in 5 to 3 direction. Then third step, termination. In eukaryotes, the actual termination of RNA polymerase 2 activity during transcription may take place through termination sites similar to these found in prokaryotes. However, the nature of individual sites is not known. तो यूकैरियोट्स में जो टर्मिनेशन स्टेप है वो एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे कि प्रोकैरियोट्स में. नाउ key features. In eukaryotes, it occurs in nucleus. Second, 3 types of RNA polymerases are needed for transcription in eukaryotes. Requirement of transcription factors. Monocistronic. It means each messenger RNA codes for only one protein. Then post-transcriptional modification. यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए है उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है 5 प्राइम एंड पे कैपिंग और 3 प्राइम एंड पे पॉली एडिनाइलेट टेल एडिशन या जिसको हम पॉली एडिनाइलेशन भी बोलते हैं. और उसके बाद स्प्लाइसिंग. प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स. हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस controlled by enhancer, silencer and regulatory proteins. Thanks.